जागतिक आणि देश पातळीवर उद्योग विश्वात झपाट्याने बदल घडत असताना या बदलांचे अनुरूप बदल मनुष्यबळ व्यवस्थापनात घडवून आणण्यासाठी मनुष्यबळ विकास व्यवस्थापकांनी सज्ज राहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन नॅशनल NHRD नेटवर्क संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेम सिंग म्हणाले. या मनुष्यबळ व्यवस्थापन व्यावसायिकांच्या संस्थेच्या 8व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. अनुभूती या सूत्रावर आधारित या अधिवेशनात 200हून अधिक मनुष्यबळ व्यवस्थापन व्यावसायिक सहभागी झाले. संस्थेच्या पुणे शाखेला या राष्ट्रीय अधिवेशनाचे यजमानपद सलग 4थ्या वेळी मिळाले. व्यवस्थापन शास्त्र या विषयातील अध्यापक तसेच अध्ययन आणि विकास या व्यवसायातील सल्लागार हेही या अधिवेशनात सहभागी झाले होते. संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेम सिंग, पश्चिम विभाग अध्यक्ष उषा सिंग तसेच पुणे शाखा अध्यक्ष अमन राजावली यांनी या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पत्रकारांशी संवाद साधला. This L&D Summit has been organized by Pune chapter of National NHRD Network with a view to discuss and deliberate on the emerging skills that are required by the HR professionals in view of the changes which are taking place in the industry. There have been a lot of changes which are taking place in the industry currently, and what it means for the skills requirement, that is the focus of today's summit. So HR professionals are required to ensure that their employees are skilled, upskilled, reskilled, and there is a lot of unlearning and learning that takes place, and therefore HR professionals are undergoing this program today in terms of what are the effective ways and methods to drive this change, how they can help the organizations better, what are some of the good practices, what are the best practices, and this cross learning from diverse set of institutions, academia and industry, this is what we are facilitating. So there is a group of people from industry, from academia, from public sector, from private sector, several sets of industries who are there as speakers today. There are experts, and I'm sure the HR professionals who are part of the summit today, also L&D professionals, will learn quite a lot of tools and practices to be able to drive their L&D agenda even more effectively. That L&D is a very important aspect of HR, we all know that, and that is the reason why year after year this summit is being organized. But at the same time, the challenge which is being added to this function is growing. Keeping into context the change in the paradigm shift which is taking place in the skill set what is required for tomorrow's job, in the way that our jobs are changing, in the way our skills have to change to cope up with whatever is happening around us. And in that context, L&D not only remains an important part, but is also the significance of this function is growing. In that context, when Pune chapter does it again and again, there is also pressure on them to come up with more creative ideas to cope up with the challenge of this function. For example, hybrid workforce. Now pandemic के बाद में ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है, और हमारे जो स्पीकर जो हमने चूज़ किए हैं, ओके, ये लोग सब इस क्षेत्र के माहिर हैं. कोई IT का है तो कोई बैंकिंग के हैं, जैसे ICICI के CHRO है, ये सब. तो वो लोग जो शेयर करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या महसूस किया और क्या सक्सेस मिला है, वो सभी इंडस्ट्री वालों को पता चलेगा. सो दे कैन रेप्लिकेट दोज आइडियाज. फिर एक है जैसे डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी अगेन इज एप्लीकेबल, मगर हियर टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट अ डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि सभी लोग इकट्ठा मिलके अपस्किल करें, रीस्किल करें और आगे बढ़े. तो वो हियर इन दिस, ये जो डाइवर्सिटी वाला जो है उसके अंदर एक और हम नई चीज़ कर रहे हैं कि देर इज़ अ प्रोफेसर, ही इज़ ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IIM शिलोंग, प्लस अ सोशल एक्टिविस्ट. तो उनके ज़रिए वी ऑल्सो वॉन्ट टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल.